as you tend to say, time is money, and yeah, it is very important to, you have your schedule, you have your routines, and you make sure that during these 24 hours that you have each day, you make sure that you do the best of it, and not just waste time, because actually, I mean, like 1 year, by the end of the year, you always feel like, oh my god, already 1 saal ho gaye. So like it's very important to plan and appreciate time. अगर मैं बिग बॉस को मिस कर रही हूँ, हाँ एक्चुअली थोड़ा सा मैं मिस कर रही हूँ. एक्चुअली इट वाज क्वाइट फन देयर. मैंने तो एंजॉय किया. सलमान खान, आप सीजन 8 देखती हैं? नहीं, मैं एक्चुअली नहीं देखती हूँ. नो, आई डोंट. टाइम नहीं है मेरे पास, और एक्चुअली जब मैंने थोड़ा सा ऐसा देखा तो मुझे लगता है कि वो बहुत झगड़ा करते हैं, और आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू सी दैट, जी, अभी मेरा शूटिंग चल रहा है अब्बास मुस्तान सर के साथ, कपिल शर्मा का डेब्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी फाउंड ऑफ वॉचेस. मुझे वॉचेस बहुत अच्छी लगती है. And मैं बहुत excited हूँ that I came here actually because the store is so beautiful itself, the way the environment is, the music and the expertise that you get here, which is very important actually when you buy a watch. It's so nice, when you get the proper information about the watch, and here you really have the expertise. And actually it was amazing क्योंकि Dior का watches अभी जो है एक ही watch है that is the last one पूरा दुनिया में. Oh yeah, so I think that one is your favorite. That one is actually my favorite. And I got to wear it and I got to pose in it, so I'm quite flattered that I got to do that. Lovely it is. Experience was great because as I said, जैसे मैंने कहा, they are really expert in explaining what all the details in the watch and what kind of watch and history के बारे में ये सब, so for like watch lovers that love the luxury watches, this is the place to go to, and I myself love luxury watches. कौन से ब्रांड की वॉच है, कुछ बताना चाहेंगे? ये मुझे बहुत ही खूबसूरत वॉच गिफ्ट में मिली है. क्रिश्चियन डियोर इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड है, और आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइमलेस पीसेस बनाते हैं. मैं कुछ भी कहूँगी आई थिंक कम ही होगा, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड लग्जरी watch brands in the world, and I'm glad that I'm here at Watches of Switzerland. It's an inauguration for the new collection, and they've chosen me, so it's a huge honor. What do you feel, what about time management? Is it a very important factor in individual's life success? I think so. I hate being late, but I'm always late. So I'm always running from one place to the other, but I think it's very important because I think you need to value other people's times and they need to value yours as well. So I think if you're a little organized, I mean, because I'm also from Delhi and I live here alone and I have to manage a household and my career all by myself, तो थोड़ा मतलब अगर टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा डिसिप्लिन नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी. बदलापुर वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है. वेरी वेरी हैप्पी. टचवुड विद इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी गॉट 1 million हिट्स, और हर जगह से मतलब बहुत तारीफ़ हो रही है. वरुण की बहुत तारीफ़ हो रही है, बस फर्स्ट टाइम उनको देखेंगे बहुत ही कुछ डिफरेंट करते हुए. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. टुडे इज़ गॉन ऑन बिग बॉस. Salman has tweeted about it. We are very excited because such a big star has noticed and has appreciated just a little teaser. तो आई होप कि ट्रेलर जब आएगा और फिल्म जब आएगी तो लोग और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे. जी, सलमान ने तो काफ़ी तारीफ की. जी, आपको भी कुछ मतलब आप ट्वीट पढ़ लीजिए. सच अ ब्यूटीफुल ट्वीट. आई डोंट नो, आई हैवंट मेट हिम सिंस, बट ही इज़ रियली लाइक्ड इट एंड एवरीबडी हैज़ रियली सेड वेरी वेरी गुड थिंग्स अबाउट द प्रोमो. एवरीवन फ्रॉम द इंडस्ट्री हैज़ गिवन अ वेरी गुड फीडबैक. तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं बदलापुर के लिए. और आगे क्या प्रमोशन अभी आप देखिए कि 20 फेब को पिक्चर रिलीज़ है, उससे पहले तो बहुत प्रमोशन होगा. आप मुझे बहुत देखेंगे तो मैं बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगी. Alright, thank you guys. So if you're aware of our store in Bandra, Watches of Switzerland, that's our flagship store. We've recently opened a new store here about a month and a half ago. What we've tried to do is we've tried to deviate from the composite store that Bandra is and try to take more niche brands in Breach Candy.
We've only opened a month and a half ago, and today's event was a Dior event. We're exclusive dealers for Dior in the city. So what we've done is we've brought some exclusive pieces down for the first time in the city for a preview for our customers and some friends as well. Our future plans, we have a lot of ideas. We're talking to a lot of brands to expand our portfolio. We're also looking at going online. We're looking at iPad apps. We're looking at various technologies to make the consumer's experience more immersive, to try and make it as comfortable and as easy connectivity as well as create an overall luxury experience for the buyer. So it does not go back to a very traditional way of buying where it's very price driven rather than experience driven. All right, thank you.